patriarchy hai, there are so many things which hold us back. But उस ज़माने में 1936 before independence, ललित भाई जी ने कल मुझे बताया, he had that kind of vision to take our women ahead, and ahead in what way? Spiritually, because that is the true knowledge. Self knowledge is the true knowledge. And you won't believe it, it is so amazing. This I got this invitation again. I feel it that it was a God sent thing. जो हमने actually, I'll tell you the background why am I here. Basically, I am heading a training center for our officers and officials in Bhopal, which is called the regional campus of NADT, that is National Academy of Direct Taxes. तो आप लोग तो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में सबको पता है. हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स आर हियर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो आई क्लैप फॉर यू बिकॉज हम 2001 में फील्ड ज्वाइन किए एज पार्ट ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस, एंड डे वन से आप लोग से हमारी इंटरेक्शन रही है. And I would say that you represent a very important aspect of finance, and we from the revenue service, all of you know the importance of revenue in collecting revenue, gathering revenue, and administration of the revenue is so important, especially in nation building. और अभी हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं. मुनि दीदी जी ने बहुत अच्छा से बताया कि विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे. हम तभी बनेंगे जब वी अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ मनी. व्हाट इज़ मनी? हम लोग इसको इतना सोचते हैं हमारे लाइफ में, बट मनी का एक्चुअली क्या मतलब, व्हाट इज़ द मीनिंग? आर वी द ट्रू ओनर्स ऑफ दिस मनी, और आर वी जस्ट कस्टोडियंस? In my opinion, and what I have read from my spiritual knowledge, whatever I have tried to gather, I feel we are just custodians. हम यहाँ पे permanent नहीं हैं. We have come here and we go there. और हमें जो दिया है भगवान ने, जिस तरीके से हम पे bestow किया है, that is simply God for the, and be grateful for the kind of money, the kind of fortune we have, kind of material riches we have. But we are holding it for a while and for God. And since that's why इसका जो सदियों उपयोग बोला आपने, understand that every day how you manage it, you should think that I am just a divine instrument. I am going to use my money properly even every day. आप हर दिन भी कुछ चीज़ करते हो, कोई चीज़ आपको एक्चुअल में चाहिए, उसको करिए. And see that the people around you, there are so many people who are underprivileged in our country. अगर हम थोड़ा सा भी डोनेट कर दें हमारे earnings में, it will make a very big difference in their life. And I'm happy to say that even I'm trying to do my philanthropy in my own way. My additional Megha Bhargav, she runs a NGO. So everybody is doing something or the other. So that is the beauty of our Indians, that we have a huge generous heart. हमारा हार्ट इतना बड़ा है कि हम तो मतलब कभी भी किसी को दान करने के लिए तैयार रहते हैं, which I haven't seen much abroad. फिलान्थ्रॉपी होता है at a very high scale, but हमारे यहाँ कॉमन आदमी भी इतने बेहतर वे में वो मतलब we understand the spirit of generosity. सो ब्रह्म कुमारी जी के इस संसार में आके, आनंद सरोवर में आके, मैं तो आई एम वेरी ब्लेस्ड. I cannot share how much I feel, but the money and mind management part, and my opinion, the main thing which we should do is ego disarmament. We should give up our ego. That is the main thing. कोई भी औहदे में